Hello everyone! Today let's go on a day trip. On the way to our destination, we are driving on the freeway towards South Mumbai. Here you can see the very famous Asiatic Society established in the year 1804. और अब हमारे सामने है the very iconic Gateway of India and the Taj Palace Hotel. Gateway of India was made to commemorate the visit of King George V, who was the first British emperor to visit India, and that was in the year 1911. लेकिन ये स्ट्रक्चर तब तैयार नहीं हुआ था. ये कंप्लीट हुआ है 1924 में. यहाँ से हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ जाएंगे एंड दैट इज एलिफेंटा केव्स. एलिफेंटा केव्स के लिए फेरी बोट में बैठकर जाना होता है. इस फेरी बोट की टिकट 275 rupees per person है, and this ferry boat starts at around 9:30 a.m. in the morning, and the last boat to leave from Elephanta is at 5:30 in the evening. तो आप अपना डे ट्रिप इसी हिसाब से प्लान करें तो अच्छा होगा. It will take us 1 hour to reach the Elephanta Caves. And the journey of 1 hour is very interesting. The huge Arabian Sea spread before us looks awesome. इस 1 hour journey में हमारे साथ होते हैं ये beautiful seagulls. And there you can see the island where Elephanta Caves are located. बोट से उतरने के बाद केव्स तक पहुंचने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं. Either we can walk it up, or other option is a very cute toy train. ये टॉय ट्रेन का टिकट सिर्फ 10 rupees है और इसकी छोटी सी जर्नी बहुत ही मजेदार है. ट्रेन से उतरने के बाद थोड़ा आगे जाने पर एक और टिकट लेना पड़ता है. अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट कॉस्टिंग मच, इट्स ओनली ₹5. इसके बाद 120 स्टेप्स. यस, यू हर्ड मी राइट, 120 स्टेप्स टू सी द केव्स. आई वुड सजेस्ट प्लीज ऐसे शूज पहने जो कंफर्टेबल हो, क्योंकि वॉक काफी स्टीप है और स्टेयर्स भी काफी स्टीप है यहाँ पर, एंड यू शुड हैव द राइट काइंड ऑफ स्टेमिना टू गो अप. वाओ, 120 स्टेप्स और फिर हमारे सामने आ जाता है द ब्यूटिफुल खारापुरी, और एज वी पॉपुलरली नो इट, एलिफेंटा केव्स का एंट्रेंस. एंट्रेंस के बाद केव्स के लिए एक और फाइनल टिकट लेना पड़ता है. This ticket is 40 rupees for Indians and 600 rupees for foreigners. Elephanta Caves का रियल नाम है खारापुरी, which means the village of caves. And how did it get its name Elephanta? It is said that when the Portuguese came here on this island, there was a statue of elephant over here. And on seeing that, they called it Elephanta. Later, when the island was ceded to the British, they transferred the statue of that broken elephant to Jijamata Udyan at Baikala, and it is still there.
These caves are approximately 1400 years old. They were built in the 7th century. ये पूरे caves जो हैं, ये monolithic structure है. Monolithic. Lithic means stone and mono means single. So what I mean to say is that एक ही बड़ा सा पत्थर है जिसको carve करके ये सारे caves, सारे statues, सब कुछ बना हुआ. Now isn't that amazing? What you see now is Trimurti, and this is considered the most important sculpture in the caves, and it is a masterpiece. And no wonder it features on the logo of MTDC, that is Maharashtra Tourism Development Corporation. Many of the statues here are either broken or disfigured. This, it seems, happened during the rule of the Portuguese. Elephanta was designated by UNESCO as a World Heritage Site in the year 1987. और उसके बाद से ही यहाँ पर कंजर्वेशन और रेस्टोरेशन का काम बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है. On the way back, we are now passing from the famous Marine Drive, which is also very popularly known as the Queen's Necklace. Further ahead, now we have reached the Worli Sea Face. यहाँ पर इतनी सारी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स के साथ साथ हम लोगों को नजर आएगा ये ब्यूटीफुल लवली मैंशन, and this belongs to Ambani's daughter. So in the end, आज के वीडियो में हमने सब कुछ देख लिया, right from the structures which were made in the 7th century to the ones which were constructed in the 19th and the 20th century, and in the end, the beautiful marvels of engineering of modern times too. यूं ही नहीं कहते, मुंबई मेरी जान है. Hope you guys enjoyed watching today's video. Please do let us know what do you think about it in the comment section. Do not forget to like, share, comment, and most importantly, subscribe. Until next time.